Hi friends, welcome to Trending Sutra. My name is Amit, and today we are going to discuss about the fortnight view on the market. What is going on to be happen in the next 15-20 days, what exactly has happened, and where we are actually heading in the next few weeks, and what are the key events before the year end. So before that, um, there is an apology from our side कि हम last 2 महीने से we have not updated and uploaded any video blog, but we were quite active on front page to our Telegram channel and other communication method to our paid subscriber and to our uh, subscriber who actually getting updates from us on our free platform on a regular basis, daily and weekly. So anyway, let's start. What is likely to be happen in the next fortnight in the Nifty and Bank Nifty और overall market हमें क्या लग रहा है. तो कुछ हम डेटा की बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद द एफआईआई एंड डीआई एक्टिविटी. सितंबर के बाद से जुलाई के बाद से एफआईआई एक्चुअली हैज टर्न पॉजिटिव कम नेगेटिव एंड अक्टूबर और नवंबर में अगर हमने देखा जाए तो करीब करीब 22,000 करोड़ की बाइंग करी है एफआईआई ने और डीआईआई ने उसके साथ साथ अपनी सेलिंग करी है करीब करीब 9,500 करोड़ के आसपास 6,500 करोड़ के आसपास की डीआईआई ने सेलिंग करी है इन द मंथ ऑफ नवंबर. अक्टूबर में वेरेज जहाँ पे निफ्टी ने करीब करीब 9% की रैली करी थी विद इन अक्टूबर मंथ, वहाँ पे एफआईआई का फिगर अगर हम बात करें तो 489 माइनस के आसपास है, वेयर एज डीआईआई रिमेन द बिगेस्ट लाइक 9,200 के आसपास की बाइंग करते हुए डीआईआई चलते रहे हैं. एफ एंड ओ मार्केट में निफ्टी इंडेक्स में कहना चाहिए एफआईआई कंटिन्यूसली पॉजिटिव हैं, दे रिमेन द नेट बायर ऑन मंथ टू मंथ बेसिस, whereas they were remain seller in the कैश सेगमेंट. तो यहाँ पे हमें जो एक चीज समझ में आती है कि इंडेक्स में कहना चाहिए वो बाइंग करते रहे, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा हल्का करते रहे. और अगर हम जैसे डीआई की बात करें तो इन लेवल्स पे डीआई ने अपनी जिस तरह से बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग की है, बिकॉज 6,300 करोड़ की बुकिंग अगर सेलिंग आती है, दैट्स वेरी क्लियरली इंडिकेटिंग कि लास्ट मंथ में हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है इन लेवल्स पे, क्योंकि निफ्टी एक डे अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया, बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम ब्रेक हाई करके सस्टेन किया उसने 43,000 को. प्लस the biggest like the inflation and all that stuff, all the news actually, which actually was the major concern from the market side. So after the inflation data got softened, तो वहाँ पे हमको मार्केट में रैली देखने को मिला है, वहाँ से देखने को मिला है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर एंड ग्लोबली आल्सो. जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एस&पी और डाउ जोन्स जो है वो बियर टेरिटरी में आ जाएगा या बियर टेरिटरी में ऑलमोस्ट आ चुका था, वहाँ से लगभग लगभग 20-22% की रैली अपने को ओवरऑल देखने को मिली है. इन लास्ट 1 मंथ एटलीस्ट आईटी इंडेक्स इज risen more than 18-20%. और निफ्टी की ओवरऑल रैली में अगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो इन्फोसिस, टीसीएस और रिलायंस का सबसे बड़ा मेजर पार्ट है, जिन्होंने इस रैली को फिल किया, पार्ट ऑफ द एचडीएफसी ट्विंस. In next 15 days, some crucial event is going to be happen. Already last Friday, last Friday, um, on 2nd of December, non-farm payroll data came. The numbers, the job data's numbers are quite good, strong. Initially, US market fell down, dollar index actually fell, and then dollar index actually rise above 105, and then again it start, correcting towards 104.70, 104.80. And stock market like US stock market, global equity market somehow get some kind of a recovery later in the later half, and in the closing they close actually on the negative side. Why actually market is, why market is still not sure that whether we are out of the woods of the inflation fear or not, and the Fed is likely to peak out with this interest rate cycle in this meeting, next meeting, or there will be any kind of a dovish signal coming from the Fed or not. So the very mixed kind of a signal, is and data is coming from the US and global market. So that is why the market, despite at the all-time high, Indian market, despite at the all-time high, uncertainty as usual is quite high. 7th of December we have a RBI meeting, policy decision आएगा हमारे पास.
मोस्ट लाइकली वी कैन एक्सपेक्ट कि आरबीआई यहाँ पे थोड़ा सा अपना कहना चाहिए डॉविश व्यू दे, डॉविश कमेंट्री दे, कंसिडरिंग कि ऑयल प्राइसेस $40 के आसपास हमारे सॉफ्टन हो चुके हैं फ्रॉम द रिसेंट पीक। इन्फ्लेशन डेटा जो है वो हमारा अब सिंस वी आर एंटरिंग इनटू विंटर, तो फूड इन्फ्लेशन और जो कोर इन्फ्लेशन है फ्रॉम द ऑयल साइड, इट माइट गेट सॉफ्टन। डॉलर इंडेक्स में प्रेशर ईज ऑफ हुआ है, डॉलर फॉल फ्रॉम 110, नाउ इट इज बिलो 105। तो ग्लोबली जो इन्फ्लेशन प्रेशर था इमर्जिंग कंट्रीज पे, इकोनॉमीज पे, वहाँ पे भी थोड़ा सा हमको ईज ऑफ देखने को मिल सकता है। चाइना के अंदर भी जो लॉकडाउन है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब अगर यहाँ से ओपन अप करते हैं वो अपनी इकोनॉमी को, तो दीज आर फ्यू फैक्टर्स विच आर क्वाइट पॉजिटिव इन अ शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म, एंड आरबीआई विल टेक नोट ऑफ दैट थिंग। तो अगर यहाँ पे आरबीआई ने अपनी पॉलिसी को उतना मॉडरेट रखा, तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए इमीडिएट टर्म हो सकता है पॉजिटिव हो, बट इन शॉर्ट टर्म इट माइट, यू नो, मार्केट विल स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट आफ्टर दैट। So that is one scenario what we are expecting. In the third week of December, 14th of December, Fed is likely to take a call on the rate hikes. So whether they will be okay with the 50 basis point and provide some advice, like provide some guidance कि आने वाले समय वो 25 basis करेंगे. But most probably they started in February last year, like this year, sorry. And most probably market is expecting, and we are expecting that February, by next February, they will be peak out on the interest rate cycle. That is the maximum what we are expecting, and market will also consider that factor as a very crucial major point, crucial point for the market to, you know, behave or take further direction and close. After that, like from after 14, 15, we have a Bank of England and ECB. So Bank of England और ECB दोनों कहना चाहिए अपने इंटरेस्ट साइकिल पे और अपने फर्दर गाइडेंस पे कहना चाहिए डिसीजन लेंगे, which is likely to affect both euro and pound. And euro and pound is one of the like two major currency who actually being a पार्ट ऑफ डॉलर इंडेक्स। इफ डॉलर इंडेक्स यहाँ से रिज्यूम करता है, यानी 15 के बाद अगर डॉलर इंडेक्स रिज्यूम करता है रैली को, then we'll have a pressure in the market. So these are few factors like RBA, from RBA 7 December till Fed, and then we have Bank of England and ECB. So these meetings and these everything are going to be very crucial. Market is likely to take guidance from that as far as data and everything is concerned. The second week of December will have a inflation data. So we'll see a guidance कि CPI inflation US के अंदर किस तरीके से is it like moderating faster or moderating at a slow pace, या stagnant है. अगर same आता है then we will have a problem. So then market will definitely react, because जो IT stocks हैं जो अभी really किए हैं, really will be pause. That is what our understanding. टेक्निकली अगर हम बात करें तो विल सी सम डेटा इन अ सेंस दैट इफ यू सी हाउ the data actually, you know, has been in the market. So you see how different assets like 2-year yield in the last 3 months or 3 months or so. 2-year yield has been risen by more than 20%, IT index 11%, bank nifty is 10%, and my 10-year is plus 8%, whereas my dollar actually has gone up by 2%. Nifty has performed by 6.97%. So that's the technical setup. If we see comparatively क्या लग रहा है year till date में अभी तक, हम अगर देखा जाए तो if we negate this 2-year yield and 10-year yield, which actually has risen exponentially, तो हम अगर यहाँ पे फेयरली प्लेस्ड हैं. निफ्टी 9% अभी तक ईयर टिल डेट में रिटर्न दे चुका है, बैंक निफ्टी 23%. डॉलर इज depreciated, rupee is depreciated by more than 9%, and my IT index is still down by approximately 19.7%. So हम we are अभी ईयर एंड पे हैं, और ईयर एंड पे हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर नजर आता है कि बैंक निफ्टी ने परफॉर्म बेटर किया है, निफ्टी ड्रैग्ड हुई है बिकॉज ऑफ IT इंडेक्स, बट रिलायंस has performed very well despite dollar and rupee has depreciated by more than 10%. So that's a major concern still in the market, and it should be a concern for the market. टेक्निकली अगर हम बात करें फर्दर, सो वी हैव दिस
market is basically seeing some kind of a tiredness at this point of time. और बैंक निफ्टी में अगर देखें तो 43,500 और 700 का जो लेवल है, जब तक ये दोबारा से ब्रीच नहीं करता है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है 43,000 ब्रेक करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग डिप दे सकता है टुवर्ड 40,000 और 42,000, 41,200, 800 और 42,000 के आसपास तक का एक हेल्दी करेक्शन हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। सेटअप के अनुसार मार्केट अभी भी अपसाइड में है, एज लॉन्ग एज 43,000 हम ब्रेक नहीं करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो मार्केट कुड रियली है लाइक, बट इट उसको ब्रेकआउट करने के लिए 43,700 के ऊपर बहुत जरूरी है। और अगर एक बार 43,700 ब्रेकआउट कर देता है तो ये कुड बी हेडिंग टुवर्ड्स 44,500 or probably 45,000 in the bank nifty. On the downside, as I am commenting, that we are expecting 41,800 should be the ideal target on the downside once we are breaking below 43,000. आरबीआई की मीटिंग के बाद प्रोबेबली वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 1000 से 1200 पॉइंट का निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट आएगा. दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. And after inflation data, we'll see a good movement in IT index, and Nifty will also moving according to that situation. Nifty की हम बात कर लेते हैं. Nifty is definitely into its nearest interim top or short of a resistance. 19,000 it couldn't break. 19,000 अगर ये break करती है तो we are heading toward 19,300 or 19,500, and that could be a very quick up to move. अदरवाइज 18,700 के नीचे अगर हम स्लिप करते हैं तो डेफिनेटली निफ्टी जो है फर्स्ट सपोर्ट लेगा करीब करीब 18,000, लाइक 18,700 के नीचे अगर डिप करता है तो 18,600 के आसपास पहला सपोर्ट है. एंड देन वी आर सीइंग सम गैप्स ओवर हियर, सो दीज गैप्स नीड टू बी फिल्ड. एंड इन द शॉर्ट टर्म, लेट्स से बाय दिसंबर, in December month, we could expect 18,100 or 18,200 on the chart if Nifty is not able to break 19,000 on the upside. So technically, the picture is very clear on this. Like technically, this is the setup what we are expecting. ऑप्शन एटा की अगर हम बात करें तो ऑप्शन एटा में 18,700 पे काफी एग्रेसिवली कॉल लेटर ने ऐड किया अपने आप को एट द टाइम ऑफ फ्राइडे क्लोजिंग पे. ये हम वीकली की बात करें. अगर मंथली पे अगर हम जाते हैं तो स्टिल मार्केट इज वेरी मच कंफर्टेबल अराउंड 18,500 एंड द मोस्ट सेफ इज अराउंड 18,000. So on the downside, 18,500 to 18,000 is 18,500 to 18,300 should be the first, not major, but yeah, it could be like major support for the market. On the upside, market is very much comfortable till 19,000 and not above that. So market में जो situation है, call side में call writer ने कम call writing करी है, put writer ने ज़्यादा put writing करी है on the monthly expiry, which is they are more comfortable. Weekly पे अगर हम बात करें तो for upcoming it's December, there are more call writer at 18,700, and we have the highest put writer at the 18,700 again. So after 18,700, around 18,400 and 18,300, we have the next sensible number of put writer on the downside. On the upside, 18,800 having the highest call writer around 80 lakhs, and after that at 19,000. So considering the data structure, until unless we are breaking 19,000 again and revisiting the Nifty, we are the downtrend or correction, a good healthy correction could be expected in the next 15-20 days. And same with the Bank Nifty. As long as rupee is holding above 81 or 80 or 80.50, the short-term pressure will remain in the system. The inflation and every numbers will be get affected. Oil actually has just entered into like just breaking some very crucial levels. But problem with the oil is that technically it may sound or it may look like quite a bearish move in the market. But since OPEC का जो मीट OPEC जो है, OPEC will take a strong call. अगर oil यहाँ से और further $4-5 अगर $6 crash होता है, so OPEC will come with some statement and they will disrupt the market. So that is the highest possibility what we are expecting. तो बहुत मेजर करेक्शन ऑयल के अंदर अभी हमको नहीं नजर आता है, जिसकी वजह से रुपये पे भी हमको बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन भी नहीं नजर आता है. एंड दैट्स व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि until unless 19,000 or 40,700 is retested in the index, we are expecting a downside correction in the market.
Otherwise, on the upside, obviously, 19,500 is quite open, and 45,000 is quite open on the bank nifty. So that's it for now. We have understanding on the market is very clear that uh, we prefer to be on the sales side. We prefer to be on the sales side with stop loss of these levels of these resistance. But as a matter of fact, the market is still buy on dips as long as we are holding above 18,600 in the future, and 40,000, 43,000 or 42,900 in the bank. The rest will see more updates now onwards on a daily basis, and we'll see how we are going to trick the market. So you can take our updates on regularly on the front page and Twitter and Telegram. Kindly, if you like this video, kindly subscribe, share with your trading friends, and do subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching. Thank you for your time. That's it for now.